Hello friends. In the last lecture, we talked about designing for a play. Some of the basic steps we went through were that you have to read the script, meet with the director and the other designers so that you know their ideas also. Then you go on to do your research and bring out your designs on paper through sketching. You decide on the colors and the fabrics that you would like for your characters. And in today's lecture, we continue on to the next step of this process, that is hiring and making the budget. Let's begin with hiring. I am inserting this step here because once the sketches are done and the fabric decided upon, you may want to search for a place which hires out costumes. You may have to hunt for places which have costumes according to your design and color scheme. Also, while you look at the designs, make sure that you also look at the fabrics. If you cannot find the exact fabric, then at least look for fabrics that are close in terms of texture, fall and shine to the fabrics you have in mind. See all the trimmings and details. A few minor variations can be allowed for. Once you find such garments, then they can then be fitted on the actors. But you should be aware that this gives you the least amount of control over the final product, as you cannot change much on a hired costume. But in case of a small budget and shortage of time, hiring may help. This is a photo of a group of dancing girls who needed to have their costumes in a single design. Lack of budget and time led to hiring of their costumes. Of course, it would have been better if they could have been freshly made, but since these went with the period in general, we had to make do with them. Let's take a small break and watch this.
शोभा जी घंटी बजा रहे हैं। नहीं महाराज, वो शोभा नहीं, आपकी मिसेज महारानी। दुहाई देना। The next point is the budget. When you have a fair idea of what all needs to be made, including costumes, footwear, jewelry, headgear, etc., then you have to prepare a budget according to the cost of the materials required. Also, keep in mind that the tailors also need to be paid if you are hiring them. As I said earlier, the order of these steps may vary designer to designer and also project to project. You may be required to propose the budget much earlier. Even in such circumstances, you need to have an idea about the play and its requirements. There are times when you need to work on a preset budget. When you make the budget, you should make a list of the characters and cost of each costume per character, as there may be more than one costume per character. Then list out the cost of the footwear, the accessories and the headgear, if any. Add the tailoring charges too. Then, once this budget has been approved, you go on to the task of buying the material. From here, we go on to purchasing and stitching. Purchasing. Now that we have the budget, we are all set to buy the material. First of all, show your designs to the tailor and decide on how much material is to be bought. Take the swatches that you have finalized and then go for purchasing the fabrics. You may find that some fabrics are very expensive and not within your budget. In such a case, go in for a similar fabric which may be of cheaper quality but may look fine on stage. If a particular fabric is not available in the exact color that you may want or need, you may need to get it dyed or find another fabric option for it. Be sure to buy all the trimmings, detailing, buttons, etc. at the same time. Do keep in mind that you need to match the trimmings properly and according to the period. If again you do not get the exact trimming you need, go in for something that is closest to your requirement in terms of design and period. You may buy the footwear if it is readily available and have the actors try them, or you may want to have them made according to your design. Let's look at this video. आज लोग जरा साहेब ज्यादा हो गए हैं। दुल्हनें साड़ियां पहनने लगी हैं शहरों की नकल में। और शरबत की जगह बोतल बंद पानी चलता है। लेकिन हम यहाँ घरों में कैद हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डर है कि लोग क्या कहेंगे। खुदा जाने क्या क्या होता होगा। तुम्हारा दुपट्टा पैरों में आ रहा है। तो क्या करूं? चलोगी तो गिर। अच्छा है, एक शख्स कम हो जाएगा। आदिला कहाँ है? आज उसने अपना सब्ज कबा पहना है, जो उसकी सालगिरह के लिए सिया था। मुश्तरी अहाते में निकली और पुकारने लगी। चूजो चूजो, जरा इधर देखो। मैं बेसाख्ता ही हंस पड़ी। जान निकली तो कैसा होता? कैसा होता? बेचारी जाने ना तमाम।
वो हम में से सबसे छोटी है और अभी उसके भरम टूटे नहीं है। या अल्लाह, उसके दुख मुझे दे दे और उसको खुशो खुर्रम रख। कितना वक्त हुआ होगा? 1 बजता है। इतना दिन चढ़ती में रात बचा ही चाहता है। एक बात जानती हो? नहीं, क्या? बोलो मत, तुम्हारी मंशा क्या है? मुझसे बेहतर तुम दोनों जानती हो। दिन भर 2 भेड़ों की तरह सिर से सिर जोड़े बैठी रहती हो, कहीं कोई घुसकर सुनना नहीं। मेरा मतलब अतहर यूसुफ से है। ओह, जमाने भर में इसी के चर्चे हैं। अतहर यूसुफ फहमीदा से निकाह पढ़ाने आ रहा है। कल रात मकान के चक्कर काट रहा था और मुझे लगता है जल्द ही इसका पैगाम आता होगा। मैं बहुत खुश हूँ। अतहर शरीफ इंसान है। मैं भी खुश हूँ। I hope you enjoyed that. So now, let's go on to see how to get the garments stitched. Stitching. The tailor needs to take detailed measurements of the actors according to the design. You may need to tell the tailor if any particular cuts are to be used. These cuts sometimes help in enhancing the body structure of some actors, while the same can be used to hide the flaws of some actors' body structures. Hence, be very clear about what kind of cut you want to use. Since these are meant for theatre and not daily wear, you can always experiment with cuts to derive the kind of results you want without breaking the main structure and shape of the garment. It is always good to leave a margin so that the costumes can be adjusted if need be. While stitching the garments, make sure that it is not too tight at the armhole, elbows, wrists and knees, so that the actors can move comfortably without tearing the costumes. Now we go on to fittings and the technicals. Fittings. Once the costumes are made, you need the actors to try them on. You may find that the actor or actress has a different interpretation of the character. You may find that they have different needs for the costume than you anticipated. You may even find that their skin coloring doesn't work with the color palette you had initially chosen for the character. In such cases, you may have to do minor reworking or change an entire costume even. But other than this, you basically need to see that all the costumes fit the actors correctly, allowing them to move freely. If there are any minor changes, you can mark them and get it corrected. During the fittings, see all the details like the buttons, knots, hemline, sleeve hem, zips, etc. Also, check that their footwear fits them properly. Let's have a look at this clipping. ताज विदेशी का तमाशा होई है। तो विदेशी का तमाशा काहे? काहे? दूर दूर से लोग आवेला, कहेला। जब विदेशी का नाच देखे चले
नाच ना हवन। कहाँ? ये विदेशी के तमाशा हवन तमाशा। और हाई तमाशा में 4 आदमी के पाठ बा। विदेशी 1, बटोही 2, रखेली 3 और प्राण प्यारी सुंदरी 4। आगे बा विदेशी बरहम, बटोही धर्म, प्राण प्यारी सुंदरी जीव और रखेलीन माया। माया के काटे वाला बटोही धर्म। जैसे स्त्री के पति छोड़ के प्रदेश चल जालन, वैसे ही आत्मा से परमात्मा पुरुष हो जालन। बीच में कारण रखेली स्त्री। ऐ झंझट के मिलाप करा देवे खातिर बटोही उपदेश। ऐ चारों के बीच में संवाद होवे के चाहिए। तो कैसन? प्यारी सुंदरी के राधिका जी लेखा, बटोही के उद्धव जी लेखा, विदेशी के श्री कृष्ण जी लेखा और रखेली के कुंवरी देखा। भैया जान जाही, स्त्री धर्म खातिर पतिव्रता धर्म जो है उस सब धर्म से सुंदर धर्म है। कैसन? तो रामा रामा उत्तम के अस राम जी से बात है। हाँ भाई, स्तुति करनी कहनी। हाँ जे हमरे पति का शीश ना दे तो अब हम जाई मरब सत साधी। रामा हो रामा, मिलब हम जस मिलत समाधि। रामा हो भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। के घर में जनाना के बैठा देलाना और अपने चल गए लान कमाए। बरस जगना एगो खत भेजता रहना, ना को खबर भेजता रहना, ना खर्च बरच खातिर 5 रुपया भेजता रहना। जब जाके दोसर जनाना रख लेता रहना। जागर में प्यारी सुंदरी नवतारी कैले काल कैले काल कत्ता पियल चाप कल के पनिया रजऊ करिया। Now, let's get to the next step, which is the technical rehearsal. This is where everyone is in full costumes, makeup, etc. Here you can see how the actors are moving and handling their costumes and see if they are comfortable. You look to make sure the costume looks complete. You look at everyone together under lights on the final painted stage and check to see if anyone looks out of place or if anyone or anything pulls your attention away from the main storytelling action. You may need to help the actors with the handling sometimes. There may be some problem an actor could be facing with a particular costume. This is the time to get all this corrected. Finally, we come to the grand rehearsal and show, before which all the work should have been done and the actors should have practiced in their costumes. Let's look at another clipping. मैं बताऊं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। खुदा खैर करे, मुझे चिंता है आपकी। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि
आपके खूबसूरत चेहरे की चमक को मैं बताऊं आपको, मैं तो कभी कभी चिल्ला पड़ता हूं सोते सोते गधे की तरह। पिछली गर्मियों में मुझे एक साथ 8 डॉक्टरों से मिलना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने आपको ठीक कर दिया होगा। अजी कहाँ कर पाए, 3 दिन में 17 उल्टियां, 5 शादी और 12 खून की। मैं तो पड़ गया बिस्तर पर, मरने को होकर तैयार, हाथ में बाइबल लेकर कि पढ़ते हुए मरूंगा तो सुकून मिलेगा। आप वाकई कमाल है जनाब, चमत्कार, यानी तब भी बच गए। मोहतरमा, अगर आप बदतमीजी न समझे तो बताएंगी कि इनकी तारीफ क्या है? जॉन-जैक बूतो, इस कंपनी की रोशनी का इंतजाम मैं ही करता हूं जनाब। मेरे दोस्त, मैं कभी पूरी तफसील से और तहे दिल से जानना चाहूंगा कि तुम सोते हुए कैसे चीखे। हाँ तो मोहतरमा, कृपया मुझे इजाजत दे ताकि विदा ले सकूं और फिर कभी आपसे मिलने का सौभाग्य पा सकूं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मैं भी चलूंगी। याद रखना, बाहर चांद नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मादलीन से आकर मिलने के लिए कहो, फिर बत्तियां बुझाओ और घर जाओ। ठीक है हुजूर। जॉन, ओह मादलीन, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। किससे? तुम्हारी बहन से। क्या मजाक है? ये मजाक है और क्या? देखो, शांत हो जाओ। और मैं? मेरा मेरे तुम्हारे बीच आज काम और दोस्ती का रिश्ता है मादलीन, प्यार का नहीं। वो काफी पहले खत्म हो चुका है, तुमको मालूम है। मौलिया, जब तुम जेल में भूखे पड़े रहते थे तो तुम्हारे लिए खाना कौन लाता था? तुम। उसके बाद 20 साल तक दिन रात तुम्हारी देखभाल कौन करता रहा? तुम। तो क्या तुम उस कुत्ते को एक दिन अचानक धुतकार कर भगा सकते हो, जो 20 साल से तुम्हारे दरवाजे की निगरानी कर रहा हो? हाँ, तुम भगा सकते हो, क्योंकि तुम जैसे आदमी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। To sum up this lecture, I would just like to quickly go through the topics we talked about today. They were hiring, budget, purchasing, stitching, fitting, and technicals. I would like you all to think about this and understand it well. In the next lecture, I will take you on a tour of costumes around the world. Till then, see you.